Hello friends, today in this video tutorial we will guide you to the process of mastering JavaScript and how to run a small functions program, which is to add two numbers using GitHub Copilot tool, which is an AI tool in Visual Source Code. Before we proceed further, let us see what kind of tools do we require here. We require two tools here, Visual Source Code and GitHub Copilot, which is again a AI tool. This will show how AI makes our life simple in different walks of life. And this is one aspect where we would see how code is generated using AI. इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे हम कैसे कोड जनरेट कर सकते हैं गिटहब को पायलट से वो एक एआई टूल है और हम इसको इस्तेमाल करेंगे विजुअल सोर्स कोड एआईडी में जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग करते हुए। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्या होंगे? पहले हम इंस्टॉल करेंगे विजुअल सोर्स कोड, उसके बाद गिटहब को पायलट इंस्टॉल करेंगे विच विल बी एडेड एज एन एक्सटेंशन टू विजुअल सोर्स कोड मार्केटप्लेस। फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे दोनों को। उसके बाद हम वो कोड देखेंगे जो कोड हमें ऐड करना है और जनरेट करना है और फिर बाद में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। So in the step by step procedure, we'll first install Visual Source Code from the official site, and then we'll install GitHub Copilot, which is available as an extension to Visual Source Code. We'll configure GitHub Copilot to the settings, and then we'll also configure Visual Source Code. Then we look at the code snippets of the functions. That is, we have two code snippets here. One is function call, and another is function definition, which will be generated using GitHub Copilot, an AI tool. And then we'll trace the step-by-step execution and the output generation, and to understand the significance of this AI tool. For installation, download Visual Source Code from http://code.visualstudio.com. And if you want to learn how to install Visual Source Code, do refer to my YouTube link, which is shown below. Here it shows in detail how to install Visual Source Code and run a simple JavaScript program. And if we are done with that, then we can come back to this tutorial where we'll show how GitHub Copilot is used to generate code in the same JavaScript program. So now open the Visual Source Code, go to the extensions, and then trace or find out where GitHub Copilot है। So आप इसको डाउनलोड कर सकते हो कोड विजुअल स्टूडियो कॉम से, और मेरी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है जिसको आप रेफर कर सकते हो विजुअल सोर्स कोड को इंस्टॉल करने का और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम उसमें कैसे रन करते हैं। अब गिटहब कोपायलट को उसको पाने के लिए आप विजुअल सोर्स कोड को खोलिए, उसमें एक्सटेंशंस ऑप्शन में जाइए और वहां आपको दिखेगा गिटहब कोपायलट। ये स्नैपशॉट है उस चीज का। दिस इज अ स्नैपशॉट ऑफ द गिटहब कोपायलट व्हेन वी लुक इन द एक्सटेंशंस। जब आप एक्सटेंशंस में देखोगे इसको तो ऐसे दिखेगा ये। जब क्लिक करोगे आप एक्सटेंशंस पे, गिटहब कोपायलट पे, तो आपको ये ऑप्शंस आएगी एक्सटेंशन सेटिंग्स, उस पे आप क्लिक कर दीजिए। सो when you click on the GitHub Copilot, it will show you a screen on the right side, which will ask you for installation. Click on the installation, it will ask you extension settings. Click on that. Now let us look at the code snippets to add two numbers. Now the code which you see in front of you is basically a function call to add two numbers. We want to add numbers 5 and 10. हम पहला जो प्रोग्राम लिख रहे हैं फंक्शन का वो है फंक्शन कॉल, जिसमें हम दो नंबर्स ऐड करेंगे 5 और 10। दो लाइन की स्टेटमेंट है। And this is the function definition to add two numbers. Function add num1 num2 and return num1 plus num2. यह है को फंक्शन डेफिनेशन दो नंबर्स को ऐड करने के लिए, जिसमें हम नंबर्स को ऐड करेंगे और उसको रिटर्न स्टेटमेंट से फंक्शन कॉल में वापस पास करेंगे। इस स्टेटमेंट को मैसे भी लिख सकते थे, इसको हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते थे, sum equal to num1 plus num2 and then return sum. We could return the statement return num1 plus num2 in two different statements. One by creating a variable called sum, variable sum is equal to num1 plus num2 and return sum. ये आप देखिए इधर, अगर ये जो आपको स्क्रीन दिख रहा है इधर, इसमें कोड नहीं है ऐड नंबर्स में। लाइन नंबर 6 पे ये हम जनरेट करेंगे यूजिंग गिटहब कोपायलट, और लाइन नंबर 15 पे है फंक्शन call add numbers. So if you see here on line number 6 to 9, we have a function definition, add numbers,
which doesn't contain any code, which will be generated using the GitHub's Copilot tool, which is the AI tool. And line number 15, we have the function call. So here the code is generated. If you see here, it is marked here in the shaded line. ये कोड जो जनरेट हुआ है, ये कोड जनरेट होता है जब आप उस पे वहां कर्सर ले जाके आप एंटर मारोगे तो कोड अपीयर होगा. टैप मींस एक्सेप्ट, जनरेट एंड एक्सेप्ट, दैट इज यूजिंग एंटर एंड टैप. ये आपको जो दिख रहा है, ये लाइन नंबर 7 टू 9 पे कोड जनरेट हो गया है. तो जैसे मैंने कहा, हमने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते ही वो रिक्वायर्ड कोड जनरेट होगा, और एक्सेप्ट करने के लिए उस लाइन को आप टैप प्रेस करोगे. So if you see line number 7 to 9, we have generated the code using the enter key. When you press the enter key, the code is generated, and then to accept that code which is generated, you press the tab. That means it is accepted and also. This is finally how the program looks like once the code has been generated using GitHub Copilot in Visual Source Code for a program which adds two numbers. Now, if we do the program, we execute this code. You see on the right side, this sum which is displaying here in the browser, because this is a program using HTML. So it opens in the browser window and the sum 15 is displayed. क्योंकि ये HTML बेस्ड प्रोग्राम है, तो ये ब्राउजर विंडो खुलेगी, उसमें आपको इसकी आउटपुट दिखेगी 15, क्योंकि ये सम ऑफ टू नंबर्स है. अब हम देखते हैं ये कैसे एग्जीक्यूट कोड कैसे जनरेट होता है. Yes, if you see here, we have this program written to add two numbers. I have the function definition here, which is without the body. If you see line number 6 to 8, the function name is there, add numbers, and no body, while the function call is at line number 14. Now, our objective is to see how the Copilot software from GitHub, which is an AI tool, generates the code. So what I'm going to do is that I'll keep my cursor next to line number 7 after the opening bracket and press enter. So if you see here, variable has appeared some here. Press tab to accept. So it has been accepted. Why this variable sum? Because it is used in function call. So it has to be the same thing. So again, I want to continue with this code generation. Again, press enter. Sum is equal to num1 plus num2 because it is picked from line number 6. Accept tab. Again, generate the next line if there is an enter. Return sum. Accept tab. So we are pressing enter and tab to generate and accept the code. And then finally, we have the closing bracket. So we have generated the code here. This is an application of the GitHub tool Copilot, which is an AI tool. It simplifies productivity, enhances our productivity, and we are able to generate code using Visual Source Code, and the program is a JavaScript program. तो जैसे आप इसमें देखोगे अभी ये जो वीडियो है, इसमें इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली जहां वो जो फर्स्ट ओपनिंग ब्रैकेट आती है वहां कर्सर को ले जाइए और प्रेस एंटर कीजिए. प्रेस एंटर करते ही वहाँ कोड जनरेट होगा. पहले वेरिएबल नेम सम आएगा, और अगर आपको सही लगता है तो आप टैब प्रेस कीजिए कि यस, हमने कोड को एक्सेप्ट कर लिया है. उसके बाद फिर एंटर प्रेस कीजिए, फिर आपको दिखाई देगा सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2. उसको एक्सेप्ट करना है, फिर टैब प्रेस कीजिए, फिर एंटर, रिटर्न स्टेटमेंट भी जनरेट हो जाएगी. तो इस तरह से गिटहब का कोपायलट टूल कोड जनरेट करता है विजुअल सोर्स. सो अगर आप देखोगे इधर, हमने अपने प्रोग्राम को रन किया है, इसमें एग्जीक्यूट करके दिखाया है प्रोग्राम को, एंड इट शोज स्क्रिप्ट इज वेरी सिंपल, और आप इसको एंजॉय कर सकते हो. सो हैप्पी कोडिंग डेज, एंजॉय योर JavaScript with Visual Source Code and GitHub Copilot, and try writing a couple of more programs. The more you practice, the more you will benefit from this. जितनी आप प्रैक्टिस ज्यादा करोगे, आप इसको एंजॉय कीजिए विजुअल सोर्स कोड को JavaScript के साथ और GitHub Copilot टूल के साथ. धन्यवाद.